Hello everyone, welcome back to Vyasa IAS CSAT course lecture number 13. Now this lecture we are starting arithmetic progression. So we have done number systems, almost 8 or 9 classes, uh, and we have done HCF and LCMO as well. So now let us begin with this class of arithmetic progression. Now let us understand what an arithmetic progression basically is. So in this chapter, we will study all the three kinds of progression. We will study arithmetic progression that we call as AP. We will study geometric progressions and we will study harmonic progression as well. Okay. So in the coming four classes, we will study all these three or four parts. Now let us understand what is arithmetic progression. Okay, so any arithmetic progression is that which increase or decrease by a common difference. Okay, any arithmetic progression increases or decreases by a common difference. So for example, let us say we take this 12 and then 11, then 10, then 9, then 8. This is what these are basically consecutive number, but also they are decreasing by minus 1. Okay, they are decreasing by minus 1. So this is a decreasing arithmetic progression. Okay, because the common difference between each of the term is what? It is minus 1. Okay, similarly, if we take 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, so these are what? This is also an arithmetic progression, but the common difference here is plus 1. Similarly, if we take this 13, 16, 19, and then we have 20, 2, okay, 20, 21, 22. Okay, so this is what? This is also an arithmetic progression. Your common difference is what? Plus 3. Your common difference is plus 3. Similarly, if we take our arithmetic progression, we have like this 10, 7, 4. Okay, so this is also a arithmetic progression. Here the common difference is minus 3. Here the common difference is what? It is minus 3. So this is what an arithmetic progression basically means. It can be positive or negative. Okay, it can be positive or negative, but the fact is that there should be a constant common difference. Okay, there should be a constant common difference. So, see, this is for very simple terms. If we want to understand an AP, we have to understand some terms related to AP. Okay, we have to understand some terms related to AP. So, you have A as your first number of the arithmetic progression, any number which is first number. Okay, that not necessarily needs to be one, it can be any number. You have Tn is the nth term. Okay, Tn is the nth term. For example, let's say we take this AP 7. So this is the third term. Okay, this is the third term. So we say T3. All right. And then we have a common difference D. Okay, that is 3 here. Okay, that is 3 here. So when we want to write any of the term of AP, let's say we want to write the nth term of AP, that is A plus n minus 1 into D. In this case, we are subtracting the common difference. Okay, in this case, we are subtracting the common difference. Now see, if we want to find this third term of the AP, what basically we are doing here is, I will multiply this common difference 2 times. Okay, I'll multiply this common difference 2 times because I have to find the third term of AP. I'll keep this as A. A is what? The first term, and I'll multiply the common difference 2 times. Then I will get the third term of AP. So are you getting this? It is okay. You know A plus n minus 1 is equals to into D is the nth term. What I am saying is that if you want to find, let's say, the second term of AP, so you will do what? Just add a common difference to it. If you want to find the third term of AP, just add 2 times the common difference. So we, for example, you need to find the 15th term of AP. So you will have the first number of the arithmetic progression and then just subtract this by 1 and you have 14 into what? 14 into D. This is your AP. Okay, so you don't have to put n minus 1 into D and all those things. Just register in your mind that if you want to find the nth term of AP, just multiply the common difference n minus 1 times and add this. Okay, so A plus 14D is basically 15 term of AP. I hope everybody understand this, because see, once you internalize these concepts, it becomes so easy for you. Okay, it becomes so easy for you. Okay,
Now see, common difference can be given by, like say for example, you know the 17th term of AP and you know the 18th term of AP. So T18 minus T17 is what? It is common difference. Similarly, if you have fourth term of AP and third term of AP. So T4 minus T3 will be common difference D. Okay, so this is how you understand what the common difference is whenever you are given an AP. All right. Whenever you are given an AP, this is how you understand what the common difference is. Okay, so we now understood basically कि AP क्या है, उसकी basic terms क्या है, ठीक है ना? Okay, so the last term of AP will be denoted by what? A n minus 1 into D. So for example, you have an AP 13 with a common difference D equal to 3, let us say, and it is asked that there are 13 terms in this arithmetic progression. You want to find the last term. So how you will do? 13 plus 12 into 3. So there are 13 terms. So the 13th term will be what? 12 into 3. So now this 12 into 3 is what? This is 36. So this becomes 49. So the last term of AP is 49. Alright, the last term of AP is 49. Now you have this sum. Okay, you have sum. So sum is given by what? N A plus L by 2. Okay, so A will be what? First term of AP. L will be what? Last term of AP. N is number of terms of AP and 2 is this. So if you don't have the common difference, you are given the first term of AP, you are given the last term of AP, you know the number of terms in the a series of arithmetic progression, you can definitely find the sum. Here you don't want the common difference. Okay. Sometimes it happens that you are given the first term, last term of AP and you are not given the common difference and still you can find the term sum if you know how many number of terms are there. Okay. Now this L, you know, I already told you this is the last term. Okay. When everything is given to you, how can you find the sum? Sum is equals to n by 2 a plus uh, that is 2a plus n minus 1 into d. So see, look at this formula. This is nothing but it was a plus L. So L is what? A plus n minus 1 into d plus a. Okay, so this is the same thing that is written n by 2 is equals to 2a plus n minus 1 into d. This is the same thing that is written. All right, this is the same thing that is written. So I hope everybody is clear with this thing. Now let's move forward. So now you understand how to find the sum of an AP. Both those formula were the same. It is just that it is written in different method. Okay. Now you have this to find the arithmetic mean between two given quantities. Okay. To find the how to find the arithmetic mean between two given quantities. Now between two given quantities, it is always possible to insert any number of terms. Okay. So see, you have, let's say one number 8, let's say we have 13 and we have another number, let's say 19. Okay, now you want to find the mean between these numbers. So how you will find 13 plus 19 is 20. This is what? 22, 32. Okay, this will become 32 divided by 2. Now what is the mean? 16 obviously. 16 obviously. So this is how you find the mean. Now see, between these two numbers there can be a possible mean. Okay, 13 plus 16 by 2, there will be a possible mean. Okay, 29 by 2. So you will have that number. Between 16 and 19 you can also have a mean. Between this mean you can also have a mean. Between this mean you can also have a mean. Okay, so between two quantities it is always possible to insert any number of terms. Okay, such that the whole series is AP. Okay, such that the whole series is AP and thus the terms are called arithmetic means. Okay, so if someone asks you between two numbers how many terms you can insert so that the series will be AP. Okay, we can do infinite number of terms. Okay, we can do infinite number of terms such that the series is AP. All right, I hope everybody is clear with this thing. Let us see more example for this. For example, we have 10 and 20. Okay, so first of all, I insert a term
10 plus 20 by 2, so I get 15. Okay, then between these two I insert a term. So what will be the term? 25 by 2, that is 12.5. Okay, and between these two, I'll insert the term. Okay, so this is what 35 by 2, and 35 by 2 is what 2 1 times. Okay, and 2 sevens are 14, and you have 17.5. You have 17.5. Then you can take addition of these two and have a term. Then you can take addition of these two and have a term. Then you can take addition of these two and have a term and have a term. Then again addition of these two and you will have a term. So see all these number which you are finding in middle, ऐसा नहीं है कि वो AP में नहीं रह जाएंगे. Every one of that them will be in AP. Okay, every one of them will be in AP. So any number of terms can be inserted. Okay, all right. Any number of terms can be inserted. We'll see the application of this concept once we move on to questions. Okay. Now look at this thing. To insert a given number of arithmetic means between two given quantities, what we are going to do. Okay. So let us see. Now you have, let's say, two number A and B. Okay. And you are given that between these two numbers insert n terms. है ना? Between these two numbers insert n terms. So now the total arithmetic progression becomes of how many terms? It will become of n plus 2 term. ओके, इट विल बिकम ऑफ n प्लस 2 टर्म, बिकॉज आपके ऑलरेडी ये दो टर्म थे, आपको बोला कि इसके अंदर 7 टर्म्स और डाल दीजिए, तो टोटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हो गए? 9 टर्म्स हो जाएंगे. ओके, so I hope you are getting this thing. So now the total arithmetic progression has n plus 2 terms. Okay, so this B is basically what? N plus 2th term, n plus 2th term. So this B is basically equal to what? A plus n minus n plus 1 into D, because n minus 1 था, n क्या है? n plus 2 है, तो that is n minus 1, so it becomes n plus 1 equal to D. Okay, now see, from here you can obviously find the common difference. You have B minus A divided by n plus 1 and you have D. Once you find the D, you can obviously get your series. Okay, once you find D, so you have, obviously you have your series. Okay, so for example, it is said that insert, this is 5, all right, and 35. Okay, this is 5 and 35. You have to insert, let's say 5 terms inside this, and they should be in AP. Okay, and they should be in AP. So how many terms total we have in our AP? 7 terms. Okay, our this is what? This is the 7th term of our AP. Okay, so this is equal to what? A plus n minus 1 into D. So 7th term है तो 6 into D. Okay, we don't know D here. Okay, this we already know is 5. This we know is 35. Okay, so from here 6D is equals to 30. Then you know your common difference is 5. So now you can always, you have to insert 5 more terms here. तो बस 5 plus करते जाइए. You have 10, 15, 25. Okay, sorry, 10, 15, 20, 25, 30. So you got your series, basically 5 का multiple है. Okay, so this is how you do this. All right, this is how you do this. Let's move a little bit forward. So we did the last thing. Now look at this. We already got it, the process of finding the nth term of an AP. Okay, and we also saw how what is the sum of an AP. Okay, now the next topic is averages of AP. So every AP has an average. Okay, so you have sum of n terms differing by a common difference D. So definitely you will have an average. So for example, let us take this series. Okay, consider the AP. You have 2, 6, 10, 14, 18 and 22. Okay, you have 2, 6, 10, 14, 18 and 22. Now what is the average of this AP? So just add this and divide by 6. Okay, add this and divide by 6. You will get your average. But why we are studying if ये सिंपली काम करना है, जो एवरेज निकालने में करना होता है. एवरेज इज बेसिकली व्हाट? सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ओके, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स जिनका आपने सम किया हुआ है.
Okay, so abhi iske liye for the sake of this let us do the average of this AP. Okay, so you have 2 plus 6 8, 8 plus 10 18, 18 plus 14 is what? I think 32 you will get 32. Okay. And 32 plus 18 is what? 50 you will get. Okay, you will get 50. And 50 plus 2 is you are going to get 72. Okay. And 72 divided by 6. So obviously you have 12. Okay, so the average is 12. Now if I say that you add the corresponding terms and divide them by 2. So if I add 2 plus 22 and divide by 2, 2 is my first term, 22 is my last term, then I'll get what? 12. Okay, if I take this number 6 and 18 and I add them and then divide by 2, what am I going to get? Again 24 by 12. So again I'm going to get 12. If I add this 10 and 14, okay, 10 and 14 and divide this by 2, again I'm going to get 12. Okay, so the sum of the corresponding terms, that will be the average of AP. Okay, now this was what? This is a six term AP. So you have even number of terms. If you have odd number of terms, let's say you have 2, 6, 10, 14, 18, 22, 24. Okay, you have this. Now I can directly say my average is 14. Okay, I can directly say my average is 14. So let us calculate and see whether I am correct or not. Okay, let us calculate and see whether I am correct or not. For the last this series, we got what? We got 12 hour average. Okay, now I add one more term. One more term is what? This is 4 more. Okay, this is 4 more. Okay, common difference यहाँ पे 4 चल रहा है. So I'll add 26 to it. Okay, I will add 26 to it. So what I will do here, my sum here came to be 72. I will add 26 more to it. So I will get what? 98, and this I will divide by 7. Okay, because now there are 7 terms. And what is the AP I am getting? What is the average I am getting? You have 7 one times and 7 4 are 28. So 14 is your average. And your middle term is 14. So you have your average is 14. But then add these last two numbers, 26 plus 2. You have 28 by 2. So 14 is your average. Add these numbers, 6 plus 22. You have 28 by 2. Again you have 14. Add these numbers. What are you going to add? 10 and 18. Again it is 28. Again you divide this by 2. Again you get 14. Okay, and 14 तो है ही. तो बेसिकली अगर आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपको जो मिडिल टर्म होगा, ठीक है ना, वो आपका एवरेज दे देगा. सो सपोज यू आर गिवन 23 टर्म्स. ओके, दीज आर ऑड नंबर ऑफ द टर्म्स. ठीक है ना. अभी देखो यहाँ पे अगर आपने मिडिल टर्म फाइंड कर लिया ना तो वही आपका एवरेज हो जाएगा. तो अगर आपको बोल दिया जाए कि ए लेट अस से 3, D is 7, okay, and there are 23 terms in total, so find the average of that AP. Okay, see now when you had 7 terms, तो आपका ये जो मिडिल टर्म था वो फोर्थ टर्म था. ठीक है, आपका जो ये मिडिल टर्म था वो फोर्थ टर्म था. ठीक है ना. सो 6 जब आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो जो आपका ये आएगा इसमें एक और ऐड कर दीजिएगा तो मिडिल टर्म मिल जाएगा. ओके, सो यू हैव 22 टर्म्स. तो इसका 11 प्लस आपका जो 12th टर्म होगा, ठीक है ना, जो 12th टर्म होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा. सो लेट अस फाइंड द 12th टर्म इन दिस केस. व्हाट विल बी द 12th टर्म? 3 plus 11 into 7. So you have 77 plus 3, then you get 80. Okay, then you get 80. So 80 आपका 12th टर्म है, वही आपका एवरेज हो जाएगा. ठीक है, 80 आपका 12th टर्म है, वही आपका एवरेज हो जाएगा. Now see, I gave you this question that we have 23 terms. Okay, the first term is let's say 3. The common difference is 7. Okay, so what is the average? Okay, now see, this can be done in one more way, na. We can calculate the first term as well as the last term, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी एवरेज हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता है 3 है. लेट अस कैलकुलेट द लास्ट टर्म फॉर दिस. सो व्हाट विल बी द लास्ट टर्म? 3 plus 22 into 7. So this is what
154 plus 3 we have 157 plus 3 divided by 2. So what this becomes 160 by 2. Okay, so this becomes 80. Then also we find the average of an AP. Okay, तो ये था जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है. जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म कोई एक नहीं है. ओके, सो वही करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म निकाल लीजिए, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए बाय 2, यू विल गेट एन एवरेज. ओके, सो इन केस देयर आर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, in case there are odd number of terms in AP, the middle term is the average, तो middle term ही निकालेंगे. अब आपका odd number of terms in AP है, तो middle term का कौन सा होगा? Suppose you have 23 terms. Okay, so divide this by 2, you get 11. Okay, 11 times and then add one more to this, so the 12th term is the odd term. Okay, तो इसी तरीके से for example you are given 57. Okay, divide this by 2, what are you going to get? 2 2s are 4. Obviously 2 8s are 16. Your 29th term is the middle term. So 29th term is the middle term, and whatever will be the value of 29th term, that will be the average as well. Okay, see, I'm not telling you to remember or to mug up these concepts, but I'm telling this because see what happens if you sometimes it comes in the question that the middle term of an AP is given. Okay, and then you are asked to find the average, एंड और कुछ भी नहीं दिया है. अगर आपको मिडिल टर्म बस दिया है एपी का, तो रिकॉग्नाइज दिस कि वही एवरेज है ना. सो यू कैन टेक दिस आउट बाय एनी ऑफ द मेथड, बट आई एम टेलिंग दिस सो दैट यू रिकॉग्नाइज सीइंग द क्वेश्चन that अच्छा this is the AP for this. Okay, all right, I hope everybody is clear with this concept. Now let's move forward. Okay, now let's move forward. Now look at this. If AP has 23 terms, okay, if an AP has 23 terms, then for instance you can predict the seventh term. Sorry. Okay, we did this. Now look at this concept. If an AP has 23 terms, then for instance you can predict the seventh term. Okay, we'll have the 17th term as a corresponding term. So what I am saying is, in this part, what is the corresponding term of an AP? Okay, what is the corresponding term of an AP? तो देखिए, अगर मान लीजिए 23 terms है, तो 1 and 23 are the corresponding terms. 2 and 22 are the corresponding terms. Okay, so this is T1, this is T last or Tn, this is T2, and this is Tn minus 1. Okay, because this is the nth term, so this is, so T2 and Tn minus 1 are the corresponding term. Similarly, T3 and Tn minus 2 is the corresponding term. Okay, T3 and Tn minus 2 is the corresponding term. Similarly, T4 and Tn minus 3 is the corresponding term. So are you getting this? So for example, what you have to do here is you have to write that number here which is 1 less than this term. Okay, which is 1 less than this number. Okay, so let's see. So for example, you are given कि T7 का corresponding terms बताएंगे अगर हमारा 23 वो है 23 है, ठीक है ना. सो 23 का अगर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमको T7 का करस्पॉन्डिंग टर्म बताना है. सो T7 का करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा? आपने Tn लिख लेना है और उसमें से आपको 6 माइनस करना है, उसमें से आपको 6 माइनस करना है. ओके, बिकॉज दिस वाज 7, जस्ट माइनस 6 हियर फ्रॉम हियर. सो दिस बिकम्स T17. ऑल राइट. सिमिलरली आपको अगर T8 फाइंड करना है, ठीक है ना, तो T8 का करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा? 23 minus 8, which is what? This will be obviously 15. Okay, it should be 16. Okay, yes, sorry, this will be 7, so this will be 16. Okay, this will be 16. Sorry for the silly mistakes, it happens for me once. Okay, so and if you are asked for T9, then T23 minus 8. So what are you going to get? T15. So T9's corresponding term is T15. Now I hope everybody is clear with this thing. What I am saying here is, if an AP is given to you and अगर आपको बोला है कि corresponding term बताइए, so T1 का corresponding term Tn है, ठीक है ना, T1 का, then T2 का Tn minus 1 है. Okay, then T3 का Tn minus 2 है. So recognize कि corresponding term अगर आपको निकालना है,
तो बस ये n से इससे एक लेस नंबर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, n से एक लेस नंबर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। T4 है, आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट दिस मच बाय गिविंग एनी फॉर्मूला फॉर्म। यू प्लीज ट्राई टू इंटरनलाइज दिस थिंग, ठीक है ना। इसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करिए कि अगर आपको फर्स्ट टर्म का करस्पॉन्डिंग टर्म पूछा है तो वो लास्ट टर्म है, आपको सेकेंड टर्म का करस्पॉन्डिंग टर्म पूछा है तो वो सेकेंड लास्ट टर्म है, आपको थर्ड टर्म का करस्पॉन्डिंग टर्म पूछा है तो आप क्या करना, Tn-2 कर देना, आपको फोर्थ टर्म का पूछा है तो आप क्या कर देना, Tn-3 कर देना। सो यू इंटरनलाइज दिस। अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे सो इट विल बी और कॉम्प्लेक्स, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ नहीं सकती, तो हम कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बना के करेंगे क्या। Okay, so this is what I am saying. Now let's move forward. Okay, let's move forward now that we are familiar with this concept as well. Now see process for finding the sum of an AP. तो देखिए, अगर आपको sum चाहिए किसी भी AP का, तो number of terms into average कर लीजिए तो आपको sum of AP मिल जाएगा. So for example, if I am doing A equal to 3, D equal to 7, and I am having number of terms is equals to 23. देन इन दिस केस आई नो दैट ट्वेल्थ टर्म जो है वो एवरेज है, तो ट्वेल्थ टर्म निकाल लेती हूँ। व्हाट इज द बिग थिंग इन दिस, सो 3 प्लस, एंड मुझे पता है ट्वेल्थ टर्म के लिए आई विल डू 11 इंटू 7, क्योंकि ये मैंने सीख लिया है। So I have 77 plus 3 80. Now it is saying to me that we have total 23 number of terms. So 80 into 23 कर देंगे. So this will be easy for us. Okay, this will be easy for us. This is 240. This is 160. So our sum comes to be 1840. Okay, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं पुट करना पड़ेगा. If you are able to remember the formula, do by that as well. Okay, बट अगर कहीं आपको एवरेज ही दिया और नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तो आप कर ली थर्ड टर्म. सो आई नो दिस ट्वेल्थ टर्म इज व्हाट, इट्स द एवरेज. सो आई विल फाइंड द ट्वेल्थ टर्म क्विकली. व्हाट इज द ट्वेल्थ टर्म, सो T12 इज इक्वल टू 3 प्लस 11 इंटू 7, क्योंकि मेरे को पता है कि जब भी आई हैव टू फाइंड द ट्वेल्थ टर्म आई मल्टीप्लाई बाई 11. सो n-1 से मल्टीप्लाई करना है. सो आई गॉट ट्वेल्थ टर्म एज 80. सो what is the sum, sum is equal to this average into 23, which is the number of terms. ठीक है, so 23 into 80 कर लिया. So this becomes very easy for us. You will have 240, 160. Okay, so you will have 1840 as the sum. So now see, you can do this by this expression as well. Okay, you can do this by expression as well. Let us check by this. So you have n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Okay, so n is what here? N is basically you have n equal to 23, है ना. पिछला जो हम वो ले रहे थे, हमने T23 लिया, हमने A3 लिया, हमने D7 लिया. So here we are checking that by formula, बस उतना ही कर रहे हैं. So n-1 यहाँ पे क्या होगा, 22 obviously, and D क्या है, 7 है. D क्या है, 7 है. So you have 154 plus 6, okay, divided by 2 and 23. So this is basically what, 23 into 160 by 2, that is 80 itself. So you will get the same number. All right, so देखिए अलग अलग जगह पे depending on what is given in the question, that you have to apply to find the sum. All right, to find the sum. Okay then, now see, finding the common difference of an AP given two terms of AP. So suppose in an AP you are given the third term and it is given 8, and you are given 8th term and it is given 28. So how are you going to find the common difference, है ना. यहाँ पे आपको corresponding term तो दिया नहीं है. तो देखिए एक मेथड तो is a very घिसा पिटा method, is you will do what, T3 is given you a plus n minus 1, that is 2 into t. Okay, so 8 is equals to a plus 2d. Similarly, this 28 you can write as a plus 7d. Now you will cancel this 8. Now you will have this 5d. Now you will subtract this 20, and then you will have what? You will have 4 as the common difference. अभी आपका 4 as the common difference, but I want you to do this thing intuitively. Okay, कि आपको फट से पता चल जाए कि क्या है common difference, ठीक है ना. तो अभी देखिए आपका थर्ड टर्म है और एट्थ टर्म है, तो थर्ड टर्म और एट्थ टर्म के बीच में आपने कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड किया, 5 बार, है ना.
बिकॉज फ्रॉम थर्ड टर्म टू फिफ्थ टर्म, सॉरी एट टर्म, आपको 5 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करके मिला है ना, 1 2 3 4 5। ओके, तो आपने 5 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया। डिफरेंस कितना है आपके थर्ड टर्म और एट टर्म में? 20। सो जस्ट डिवाइड 20 by 5 एंड यू गेट योर कॉमन डिफरेंस। ओके, सो आर यू क्लियर विद दिस थिंग? बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये a प्लस n माइनस 1d तो ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सेइंग। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए दे दिया है दो टर्म्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग a equal to, let's say, I'll take a equal to 3. Okay, then I have the last term as 154. Okay, now I don't know the common difference and I am given कि मैंने 23 टर्म्स का मेरा प्रोग्रेशन था, ठीक है ना, 23 टर्म का मेरा प्रोग्रेशन था। तो अभी मैंने डिफरेंस नहीं पता, मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं पता। ओके, एंड ए एल से ए तक है ना, द डिफरेंस इज 151 एंड मैंने कितने टाइम्स ऐड किया? मैंने 23 टाइम्स ऐड किया इसमें। ओके, मैंने 23 टाइम्स ऐड किया बेसिकली, है ना, 22 टाइम्स ऐड किया एक्चुअली, है ना, बिकॉज 23 - 1 है ना, तो मैंने 22 टाइम्स ऐड किया, तब जा करके मुझे क्या मिला? तब जा करके मुझे ये कॉमन डिफरेंस मिला। ओके, ओके, लुक एट दिस थिंग। सो वी हैव, ये मैंने फर्स्ट टर्म 3 ले लिया एंड आई टेक फॉर एग्जांपल लेट्स से टर्म ले लिया मैंने 157। ओके, 157 ले लिया एंड नाउ बेसिकली इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस डी इफ दिस इज द 23rd टर्म and this is the first term. Okay, if this is the first term and this is the 23rd term. Okay, so basically what is the difference between both of these number? 154 एंड मैंने कितने टाइम ये ऐड किया कॉमन डिफरेंस, जो मैं ये 157 तक पहुंची? 23 - 1 दैट इज 22 टाइम्स, सो आई जस्ट डिवाइड दिस बाय 22। okay, I will just divide this by 22, so what I am getting 7, so my common difference is what? 7। I hope everybody is clear with this thing. What I am saying is कि दो नंबर के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस आपको एपी में पूछ रहा है तो टर्म का पता कर लीजिए, जो टर्म का नंबर है वो माइनस कर लीजिए। जो यहाँ 8 टर्म था या थर्ड टर्म था, आपको 5 मिला, इन दोनों को माइनस करिए और जो भी आपका आए उससे डिवाइड कर दीजिए, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। ओके, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। तो इसको जल्दी करने के लिए हम ये अप्रोच हटा रहे हैं कि this one is equals to a plus n minus 1 is d, ये वाला is equals to, and then we are solving this linear equation. No, now we are aptitude students, we can do things faster. Okay, so now it is saying find the sum of an AP of 17 term whose third term is 8 and eighth term is what? 28. Okay, उसका थर्ड टर्म 8 है एंड एट्थ टर्म इज 28। ठीक, सो आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी। सो सम के लिए या तो a प्लस एल बाय 2 मिल जाए, है ना, तो उसमें मैं एंड कर दूं मल्टीप्लाई, ठीक है। सो बेसिकली इफ आई गेट एवरेज हियर, सो आई कैन मल्टीप्लाई दैट बाय नंबर ऑफ टर्म्स एंड देन आई विल गेट इट। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे वापस हम क्या कर सकते हैं, या तो करस्पॉन्डिंग टर्म का खेल खेल लें। सो यू हैव लाइक व्हाट, AP इज इक्वल्स टू 17। ओके, AP इज इक्वल्स टू 7, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 17 है, तो हमें पता चल गया n इज इक्वल्स टू 17। अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट हमको यहाँ पे d नहीं पता है, सो क्विकली कैलकुलेट d। सो दैट इज व्हाट, 28 - 8 डिवाइडेड बाय 8 - 3, so that becomes what? 4 for you, that becomes 4 for you। now you have 17 terms, you have 17 terms, so quickly calculate the last term। so 16 into 4 कर लेंगे और इसमें क्या कर लीजिए, a ऐड कर लीजिए, बट आई डोंट नो माई फर्स्ट टर्म एज वेल। ओके, मुझे फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, तो फर्स्ट टर्म करने के लिए मैं दो चीजें कर सकती हूँ, एक तो 8 में से 2 बार 4 सब्सट्रैक्ट कर दूँ, है ना, क्योंकि ये थर्ड टर्म है तो 2 बार 4 सब्सट्रैक्ट करूंगी, फर्स्ट टर्म में पहुंच जाऊंगी, ठीक है ना। सो फर्स्ट टर्म बिकम 0 फॉर मी। ओके, पहला टर्म 0 है, सो 16 into 4 बेसिकली मेरा क्या हो जाता है, दैट इज माई लास्ट टर्म। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्वियसली 64। अब नाउ यू नो द एवरेज a plus l, so a is what? 0, this is 16,
divided by 2 and n is 17. Now this is what 7 8s are 56 and your 8 1s are 8. 136 is your sum. Okay, 136 is your sum. तो अभी देखिए one is this method, other is that n by a 2 plus n minus 1 into d. So D obviously you have taken out कि 4 आया था. Okay, D is 4 for you. And A, what is the first term A? So obviously you can take it out. First term is what? ये second term है, आप इसमें -4 करोगे तो 4 आ जाएगा, इससे -4 करोगे तो 0 आ जाएगा. So now you know your first term is 0. Okay, so this is 0 into basically process तो same ही है ना. We have 16 into 4 and this is 17 by 2. So this is what 2. Okay, so obviously this is how you get your. So I hope now everybody is clear with the methods related to this. Okay, now see, look at this concept. It is one of the important concept that is being asked in CAT examinations. तो अभी देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एपीज होते हैं. तो फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट इंक्रीजिंग एपीज. तो अभी जब इंक्रीजिंग एपीज होते हैं तो ऑब्वियसली आपका सम जो है वो धीरे धीरे करके ऐसा बढ़ेगा. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर बढ़ेंगे तो आपका सम भी बढ़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम यू आर एडिंग देन इट विल इंक्रीज. ओके, सो व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द इंक्रीजिंग एपी इज पॉजिटिव, ठीक है ना, अगर आपका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो 0 पे 0 एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके आपका सम ऐसे बढ़ेगा. एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज नेगेटिव. सो फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, ठीक है ना, तो आपका जो सम है वो धीरे पहले थोड़ा डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, 0 पे कट करेगा कुछ n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एंड देन फिर इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग -4 -8 0 4 8. ओके, इज दिस एन एपी? No, I will have -8 -4 0 4 and 8. Now this is an AP. So you have -8. तो पहला टर्म का अगर सम करेंगे तो -8 आया. जब मैंने दूसरा टर्म इसमें मिलाया तो -12 आ गया. तो -12 आ गया यानी मेरा सम और कम हो गया. देन मैंने और इसमें कॉमन डिफरेंस 4 ऐड किया, तब ये जाके 0 हुआ एंड देन इट इंक्रीजेस. ओके, एंड देन इट इंक्रीजेस. तो अगर फर्स्ट फ्यू टर्म नेगेटिव रहेंगे तो आपका पहले जो सम ऑफ नंबर है वो भी क्या है, थोड़ा नेगेटिव में जाएगा, फिर 0 आएगा and then it will increase. But if the first term is positive then you will have increasing AP. So I hope everybody is now okay with this concept. So let's move on. So now this concept is really of use to us. Okay, this concept of really of use to us, how we will see. Now see, you have this specific case of sum to n1 terms being equal to sum to n2 terms. Okay, तो कुछ n1 terms का sum कुछ n2 टर्म्स के बराबर है ना, मतलब 0 से n1 का सम विल बी इक्वल टू 0 से n2 का सम. सो हाउ दिस हैपेंस? ओके, सो जस्ट लुक एट दिस. इसके लिए देखिए आप अच्छे से. यू आर बीइंग गिवन -12 -8 -4 0 4 8 12. ऑल राइट, यू आर गिवन दिस सीरीज. नाउ सी द सम ऑफ as is evident, the sum to 2 terms and the sum to 5 terms in this case is same. Okay, अभी आप sum to 2 terms देखिए. इसमें 2 terms का sum क्या है? -20 and 5 terms का sum देखिए क्या आ जाएगा. This 4 and 4 will get cancelled, again -20. Okay, so now I think you are familiar with this thing that sum to 2 terms is equal to sum to 5 terms. Okay, ठीक है. फिर आप इसमें से एक S3 एक इसमें बढ़ा दीजिए और एक इसमें घटा दीजिए. ना यू सी S3 है ना, ये S3 है. सो इट सम विल बी इक्वल टू S4 ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि एक में करने से 0 ही तो ऐड हो रहा है. ओके, 0 ही तो ऐड हो रहा है. सो दिस इज हैपनिंग लाइक दिस. ओके, so I hope everybody is clear with this thing. Now you have -12 -8. Okay, -4. तो ये बेसिकली आपका सम क्या आ जाता है? -20 -24. S3 S4 भी करेंगे then you have what? -24 only. So you have this S2 is equals to S5, S3 is equals to S4. So obviously you know S1 का सम S6 के बराबर होगा. ओके, S1 का सम S6 के बराबर होगा. तो देख लीजिए S1 क्या है आपका? -12.
Sum of one term is what? That term only. And then you have S6. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So everything this will get cancelled. So sum of 6 terms will be what? Minus 12. Okay. So देखिए whenever the sum of first few terms is negative, this can happen. Okay. This can happen whenever the sum of first few term is negative. Now this will not happen for every arithmetic progression where sum of first few terms is negative. Okay, this will not happen for every arithmetic progression. So let's elaborate a little more on this. Okay, so now you have this minus 8, minus 3, plus 2, plus 7 and plus 12. Okay. So basically यहाँ पे plus 5 is the common difference and the series is starting from what? Minus 8. ठीक है ना? तो अभी देखिए अगर हम first का minus 8 करें ठीक है ना? तो whether this minus 8 will be equal to the sum of any terms. Okay. The sum of any terms. तो देखिए लग तो नहीं रहा है S2 यू करेंगे तो यू विल गेट -11 S3 इफ यू विल डू S3 if you will do then it will become what -9 okay S4 if you do then it will become what this is all this is -11 plus 2 is -9 plus 7 is -2 and plus 12 is what 10 ओके तो यहाँ तो हमको ऐसी कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है ना लेट अस चेक फॉर दिस टर्म दिस सीरीज ओके लेट अस चेक फॉर दिस सीरीज तो अभी आपका ये क्या है दिस इज व्हाट you have first term as 13 t1 let's say we have -13 and then we have plus 4 as the common difference okay so s1 -13 hai what is s2 it is -20 what is s3 it is -21 what is s4 so s4 में क्या है आपको +5 करना है so then अभी ये कम हो जाएगा मतलब कितना so this will be -16 okay s5 आपको क्या है इसमें 11 प्लस करना है your sum will be equal to what minus इसमें आपको 11 प्लस कर रहे हैं your sum will be equal to how much it will be equal to -5 okay then do +5 more then your sum will be equal to 6 okay तो अभी हमको यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा sum of first few terms तो negative है ना these were negative term but still we are not getting but look at this series okay look at this series we have -12 -6 0 6 12 okay now add this you have s1 is equals to -12 okay s2 is equals to -18 s3 is equals to -18 itself s4 is equals to how much again this 6 will add then will have -12 s5 s5 will be equal to how much this and this will get cancelled this and this will get cancelled your s5 will be 0 okay your s5 will be 0 s6 you will have how much let us this is 6 and you will have 18 you will have 18 so this is 18 okay this is 18 so here you know your s2 is equals to s3 ओके देन योर S1 इज इक्वल्स टू S4 अब देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते ना यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते बिकॉज S2 S3 के बराबर हो गया है S1 S4 के बराबर हो गया इफ यू डू S3 देन यू नो दैट इज इक्वल टू S2 ठीक है so I hope and S5 is equals to what S0 sum of zero terms is what 0 so you are getting this only okay you are getting this only so I hope you understand the anatomy of these things okay now just look at one more series we have this -15 -9 -3 plus 3 9 15 what is the sum of one term -15 what is the sum of two term so -15 -9 is -24 what is the sum of three terms -27 okay now what is the sum of four terms so just add plus 3 to this so you will have what -24 okay now s5 just add plus 9 to this so you will have what -15 you will have -15 and s6 is what यहाँ पे plus 15 कर लीजिए है ना यहाँ पे plus 15 कर लीजिए so 0 so here you get what s1 is equals to s5 s2 is equals to s4 okay s2 is equals to s4
तो अभी देखिए इस वे में, और S3 इज इक्वल टू S3 ओनली, बट यू गेट वन मोर थिंग, S6 is equals to S0. Okay, S6 is equals to S0. So you get this relation, S1 is equals to S5, S2 is equals to S4, and S0 is equals to S6. है ना? So I am telling you these series again and again so that you will be able to deduce when asked in question. Okay. So now look at this question. ये cat में आया था question. So this was a question in cat. Let's see whether we can solve this or not. So you are given sum of 12 terms. The sum of 12 terms of an AP is given. All right. The sum of 12 term of an AP is given. And the sum of 12 term is given equal to S18. Okay, the sum of 12 terms is given equal to S18. So what will be the sum of 30 terms? है ना? 30 terms का sum क्या होगा? It is asking. Okay, what will be the sum of 30 terms? तो देखिए आपका S12 S18 के बराबर है. Okay, so what I will do is, if I add plus 12 to this, then I'll have to subtract minus 12 from this, because ऐसे ही कर रहे थे, आपका S2 S3 के बराबर हो रहा था, S1 S4 के बराबर हो रहा था, ठीक है ना? So the moment you subtract this from this, the moment you have to add 1 to this. तो अगर मैंने इसमें 12 प्लस किया तो मेरा 30 टर्म्स का सम हुआ. सो दैट मोमेंट आई विल सब्सट्रैक्ट माइनस 12 फ्रॉम दिस, तो ये 0 टर्म्स का सम हो जाएगा, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा. नाउ दिस वाज वेरी इंट्यूटिव, यहाँ पे तो कुछ सीरीज भी नहीं दी हुई थी, बट द डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था. तो अभी आई थिंक इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एक बार और इसको कर लेते हैं. लाइक आई शोड यू इन ऑल दीज सीरीज, ये जब हम सीरीज कर रहे थे तो आई शोड यू हाउ S1 was equal to S5 and then S2 was equal to what, S4, तो फिर S3 तो S3 है ना? So what I did was, when I add one term to this, I'll subtract one term to this. Okay, अगर मैंने इसमें add one किया तो मैंने subtract करना है ना? तो बिल्कुल वाइस वर्सा करना है ना? कि अगर आपने एक का टर्म बढ़ा दिया, so for example अगर मुझे बोला कि S12 और S6 का सम सेम है, ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा कि सम ऑफ, लेट्स से आप बता दीजिए मुझे सम ऑफ 18 टर्म्स बता दीजिए, ठीक है ना? तो S12 प्लस 6 अगर मैंने किया तो आई विल सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 6 हियर, सो दैट सम विल बिकम हाउ मच, 0, है ना? दैट सम विल बिकम 0. तो अगर आपको बोल दिया इसमें कि you have sum of 12 terms and that is given equal to 18 terms. Now it is asking for you sum of 30 terms. So 18 plus 12 is what? Obviously 30. And so S12 minus 12 is what? S0 is equals to S30. So that becomes 0. So this answer becomes 0. I hope everybody is clear with this thing. Okay, I hope everybody is clear with this thing. So this was a concept in AP which is much ignored, but we did it. है ना? So you can expect, अभी UPSC is trying to pick up question from the CAT previous year. So obviously now you can do this kind of question. Now see, we have decreasing APs. What are decreasing AP? कि पहला term positive है ना? And then देखिए decreasing AP का तो ये है कि your AP will go on decreasing, है ना? So you will go on subtracting a common difference. So for example 28 आपका first term है, common difference आपका 4 है, और ये decreasing AP है, तो आपका next term क्या हो जाएगा? 24, then 20, then obviously 16, then 12, then 8, then 4, then 0, then minus 4, and so on. Okay, so I hope you are familiar with this, sir. Okay, now you have a decreasing AP with first term negative. अगर decreasing AP है और पहला term negative है, ठीक है ना, तो उसके sum का क्या हाल होगा, ठीक है ना? So like I have this -8, okay, -8, and then पहला टर्म -8 है, मेरा -4 कॉमन डिफरेंस है, तो आई कीप ऑन एडिंग दिस, तो -12 -16 एंड सो ऑन, तो इसको ऐड करते जाएंगे तो ये नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा. सो आई विल हैव सम दिस काइंड ऑफ दिस, ठीक है? और अगर इसका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, अगर इसका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, लेट अस से कि फर्स्ट फ्यू टर्म्स पॉजिटिव, कि 20 से चालू होता है, -4 इज द कॉमन डिफरेंस. सो आपका क्या है, नेक्स्ट टर्म इज 16 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा 12 एंड सो ऑन, ठीक है ना?
सो देखिए पहले क्या होगा, योर सम विल इंक्रीज फॉर अ वाइल, है ना, एंड देन वो जीरो आएगा एंड देन इट विल डिक्रीज. सो दोज वेर द सीरीज जिसमें हम देख रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा था. सो लाइक कि सम ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ दैट टर्म एंड ऑल, ठीक है ना. So this is the concept here. Now I think everybody will be able to do these things. देखिए graphs, why I told you, because see if anything come in the graphical format, तो कुछ नहीं है क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, यही तो देखने हैं हमें. जब हम ये ग्राफ देखते हैं so basically हम क्या बोलते हैं कि as the value of x is increasing so is the value of y increasing. Okay, जब ये ग्राफ देखते हैं तो ये हमको यही तो बताता है कि as the value of x is increasing so is the value of y, यानी x is directly proportional to y. बस यहाँ पे ये काम हो जाता है कि x is proportional to y का स्क्वायर. Okay, x is proportional to y का स्क्वायर. So there is a little bit of minor concepts in this. Okay, so try to interpret graph as well. Now let's move on to the next concept. Okay. Now see, there are some properties of AP that we will see in this class. So if the same quantity be added to or subtracted from all terms of AP, the resulting terms will form an AP but with the same common difference as before. ठीक है ना? तो what it is saying कि if you have like in AP you have like this 20, 24, 28 and so on. ठीक है? Common difference you are taking equal to 4. Now if the same quantity be added or subtracted from an AP, तो हमने ये सारे terms में से ये like let us subtract minus 4 from each of these terms. So what will these become? 16, 20, 24. So again this is an AP and common difference is 4 only. And अगर आप इसमें कुछ ऐड भी कर देते, for example if you add 4 to this, then you have 24, 28, 32. So common difference is 4 only. Common difference is 4 only. Okay, so what you will add here? Okay, so basically it is saying कि अगर आप किसी AP के terms में सारे ही terms में same operation कर दें of addition by a same number और subtraction by a same number, then that is also AP, but उसका common difference वही रहेगा जो पहले वाले AP का रहेगा. Okay, common difference वही रहेगा जो पहले वाले AP का रहेगा. So that is what this property said. Now look at this. It is saying if all the terms of an AP be multiplied or divided by the same quantity, the resulting term will form an AP but with a new common difference which will be the multiplication and division of the old and common difference. So देखिए जब addition और subtraction कर रहे थे ना AP के साथ तो उसके common difference को कुछ भी नहीं हो रहा था. But अगर हम subtraction या multiplication या division कर देते हैं. So for example I am taking this 28 and 24 and 20. So this is an AP with a common difference 4. Now what I do is I divide this all by 2. Okay, so this will become 14, this will become 12, this will become 10. So now this is an AP, this is a decreasing AP. The common difference becomes 2. So obviously this common difference became divided by how much? The number which I divided it by. Okay, the number which I divided it by 2. So देखिए मल्टीप्लीकेशन का वही इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाई 2 देन मल्टीप्लाई इट्स कॉमन डिफरेंस ऑल्सो बाई 2. इसको देख लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस लाइक 12, 16, 20 and so on, 24 and so on. So we know here common difference is 4. Now I multiplied this number by 4. Okay, these all terms I multiplied by 4. So this will become 48. This will become 64. This will become 80. Okay, this will become what? This will become 24 into 4 is 4 4 are 16. 1 2 4 96. Okay, this will become 96. So now you have what? An AP with plus 16 as the common difference. Okay, you have an AP with plus 16 as a common difference. So what happens here is your common difference got multiplied by 4. Okay, because I multiplied by 4 in all these stuff. You can see everywhere you will have the common difference as 16. So I hope everybody is clear with this thing. Okay, try to revise these properties again and again, the number system ki bhi properties and these properties, because they will help you. Okay, now see if you have to assume 3 terms of an AP, you can obviously assume A minus D, A and A plus D. Okay, ये 3 terms AP में है ना, क्योंकि एक का common difference इससे पीछे, एक का common difference इससे आगे है. Okay, or you can
ऑलवेज टेक एट ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, है ना। तीन टर्म्स को आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। फोर टर्म्स को अज्यूम करना है तो क्या करेंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, फोर डी ऐसे करके भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। अच्छा, अगर आपको फाइव टर्म्स अज्यूम करने हैं तो हाउ यू विल डू दिस। फाइव टर्म अज्यूम करने के लिए पहला टर्म ए लीजिए, ए प्लस डी लीजिए, ए प्लस टू डी लीजिए, यहाँ पे ए माइनस डी लीजिए, यहाँ पे ए प्लस टू डी ले लीजिए। सो आई होप एवरीबडी नाउ इज फेमिलियर कि ये ऐसे ले सकते हैं, है ना। वी कैन अज्यूम दीज टर्म्स। ओके, जब क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर। नाउ सी सम ऑफ द फॉर्मुलेज यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, व्हाई, बिकॉज उनका यूज आ जाएगा। तो थोड़ा इसको रिवाइज करके रिमेंबर करना जरूरी है। सम ऑफ द फॉर्मुलेज, सी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज व्हाट, एन एन प्लस वन बाई टू, है ना। अब देखिए ये एन एन प्लस वन बाई टू इज वेरी लॉजिकल बिकॉज फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात हो रही है। सो इट इज ऑलवेज टू ए एन प्लस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, वन, कॉमन डिफरेंस क्या है, वन, तो आपका क्या बचता है, टू प्लस एन प्लस वन। ओके, टू प्लस एन प्लस वन, यही तो बचेगा आपका। डी इज वन, ओके, एंड दिस इज, सॉरी एन माइनस वन होता है ये, एन माइनस वन, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज नॉट एन प्लस वन। सो यू हैव दिस एन माइनस वन, ओके, सो दिस बिकम्स माइनस वन, दिस बिकम्स प्लस वन, सो यू हैव एन प्लस वन। सो ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव्ड है, बट दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या है, कुछ नहीं है, एन एन प्लस वन बाई टू कर लीजिए, है ना, एन एन प्लस वन बाई टू कर लीजिए। देन देखिए, और देखिए ये बेसिकली फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि पहले 15 नेचुरल नंबर्स का आप एवरेज बताइए, तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म 1 है, आखिरी टर्म 15 है, एवरेज क्या हो जाएगा 16 बाई टू, दैट इज 8, 8 इसका एवरेज हो जाएगा। और 8 इंटू हम 15 कर लेंगे तो हमें सम मिल जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स के साथ तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ओके, नेचुरल नंबर्स के साथ बहुत ही सिंपल है। अभी आपको बोला फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ओके, तो स्क्वायर का सम फाइंड कर लेंगे। सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस एज वेल। ओके, so see, sum for first n natural number is what? See, for finding the sum of n natural number is what? S is equals to n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. Okay, divided by 6. The sum of the squares of first natural number is what? N plus 1, 2n plus 1 divided by 6. Okay, you can remember this. Remember this formula that thus to find the sum of square of the first natural number, आपका आएगा sum is equals to n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. Now what is n here? N is equals to the number of natural numbers, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला कि 1 से 6 तक के स्क्वायर के जो नंबर है उनका सम फाइंड करिए, सो ऑब्वियसली you can find 6 into 7 into, this is 2 into 6, that is 13 divided by 6. So basically it comes to be what? 7 into 13. Okay, so this is, see, this is on the easier side only. Just remember this formula. Just note down this formula in your this handout so that it is there with you. Okay, now look at this. To find the sum of the cubes of first n natural number, sum of the cubes of the first natural number आपको चाहिए. So what will be that? So that is the formula is n plus 1 by 2 का whole square. ठीक है, तो n प्लस 1 बाई 2 जो है आपका सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है, इसी का आप होल का स्क्वायर कर देंगे तो आपको सम ऑफ फर्स्ट क्यूब्स का नंबर मिल जाएगा. सो दिस इज अ फॉर्मूला विच यू विल हैव टू मेमोराइज. ओके, बिकॉज देखिए अगर आ गया तो डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन में आया
है ना. सो यू कैन डू इट डायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ लिया कि 36 इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. ओके, 36 is the sum of cube of first natural number. How many natural number squares have been added? ठीक है ना, कितने number of squares को add किया है. So obviously 36 you will put equal to what? n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. ओके, सो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, विल गेट व्हाट? 6 एंड दिस विल बी n plus 1 by 2. Okay, so sorry, this will become 12, this will become 12. So we all obviously know n is what? 3. Okay, because 3 into 4 is 12 and this is what? 3 and this is 4. So n हमारा 3 हो जाएगा. So मतलब 1 square plus 2 square plus 3 square, sorry, 1 cube plus 2 cube प्लस 3 क्यूब को ऐड किया तो कितना मिला? 36 मिला. ऑब्वियसली दिस इज 8, दिस इज 27. सो यू विल हैव व्हाट? 36. ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस थिंग. ये बेसिकली फॉर्मूलेज किस काम आते हैं, आई शोड यू. ओके, नाउ सी, अगर आपको फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का टर्म पूछे, आपको पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, सो दैट विल बी एन स्क्वायर. ओके, आपको फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स का सम पूछा तो दैट विल बी एन स्क्वायर. आप इसको करके देख लीजिए. फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का आपको अगर सम पता करना है तो आपका सम ये होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन बाई 2. ओके, नाउ देखिए आपका a क्या है? 1 है. आपका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है. ठीक है ना, a 1 है, कॉमन डिफरेंस आपका 2 है. ठीक है, तो पुट कीजिए यहाँ पे, यू विल गेट 2 हियर, यू विल गेट व्हाट? n माइनस 1 इंटू दिस 2. ओके, तो अभी देखिए यहाँ के क्या बचेगा? 2n बचेगा, n बाई 2 है, दिस 2 गेट्स कैंसिल, यू गेट n स्क्वायर. तो आया तो ये फॉर्मूले से ही है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर दिस, क्या कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो n स्क्वायर के बराबर होता है. इट कैन बिकम हैंडी फॉर यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस. See, because there are so many concepts related to arithmetic progression, I want to introduce them to you. And then see, we have 4 classes, we can do a lot of questions. Okay, and to find the sum of first n even natural number, आपका n plus 1 आएगा. अच्छा, ठीक है ना. फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो आपका n प्लस 1 आएगा. ऑब्वियसली यू कैन डू दिस एज वेल. यू हैव 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n बाई 2. यू नो a इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, फर्स्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो a इक्वल टू 2 आएगा, d is also equal to 2. So now you can obviously put it. So you have 2 into 2 here, you have n minus 1, ये 2. ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 4 plus 2n minus 2. Okay, so this is what you are left with 2n plus 1. Okay, because this will become plus 2, so 2n plus 1 and n, so this will become cancel, you will have n square plus n. Okay, you will have n square plus n. So this is how you can do this. Okay, I hope everybody is clear with this thing. Now let's move forward. Now you have, now look at this. To find the sum of odd numbers less than n where n is a natural number. Okay, to find the sum of odd numbers less than n if n is a natural number, है ना. तो अभी अगर odd numbers का आपको sum find करना है, ठीक है, odd, to find the sum of odd numbers if n, if this is less than n where n is natural number, तो अगर n is odd, ठीक है, n is odd, ठीक है ना, आपको ऑड नंबर का सम फाइंड करना है. ठीक है, और अगर n लेस देन और इक्वल टू n और अगर n ऑड है, सो ऑब्वियसली आपका जो सम आएगा वो आएगा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर. ओके, एंड इफ n इज इवन देन दैट विल बी n बाई 2 का होल स्क्वायर. Okay, so remember this. Similarly, to find the sum of even numbers less than or equal to n where n is a natural number, तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं. बट सी, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, बिकॉज वंस यू गेट दिस, यू नो नाउ थाउजेंड्स ऑफ मेथड. आपको सम फाइंड करना है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कर लीजिए. ठीक है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिल जाए उससे कर लीजिए. ओके, सो obviously this is easy, but this is only applicable when we want to find, अभी यही फॉर्मूले के फॉर्मेट में दिया है ना, then उसका कोई एप्लीकेशन है, then it is applicable to you. Okay, so this is about it.
एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 डिविजिबल बाई 3, है ना। 100 एंड 200 के बीच में वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। सी बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको इनके और इनके बीच में निकालना है, ठीक है। आपको इनके और इनके बीच में निकालना है। सो यू नो 102 इज डिविजिबल बाई 3 क्योंकि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, है ना। तो 102 से चालू करते हैं, है ना। दैट विल बी अवर ए 102। ठीक, ये पता है। लास्ट नंबर देख लेते हैं कौन सा होगा। whether 199 is divisible by 3, no, because 9 plus 9 is 18 plus 1 is 19, no, it is not divisible। ठीक है, हमको पता है 198 तो डेफिनेटली इट इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 9 प्लस 9 इज 18। ओके, तो हमारा लास्ट टर्म क्या है 198, ठीक है ना। हमारा लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म क्या है 198। नाउ ऑब्वियसली वी नो व्हाट, कॉमन डिफरेंस पता है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल ही लेंगे। 198 इज इक्वल्स टू व्हाट, 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो दिस इज 3। ओके, तो अभी आपके नंबर ऑफ टर्म्स पता ही चल जाएंगे। 198 minus 102, what are you going to get? You get 6 here, this will be 9 itself, 96 here, this will be 0. So 96 is equals to n minus 1 into 3. Now this is what, 32. So n is equals to how much, 33. So you will have 33 terms between 100 and 200 that are divisible by 3. Okay, 33 terms between 100 and 200 that are divisible by 3. So now when you have AP, you have a lot of application of these. Okay, you have a lot of application of these. Okay, and see how to count number I have already told you। अगर आपको दोनों साइड इंक्लूड करने हैं तो आपने n2 माइनस n1 किया है, प्लस 1 कर दीजिए। अगर आपको एक तरफ ने इंक्लूड करना है तो n2 माइनस n1 रखिए, ठीक है। आई विल कॉल दिस एज n2, दिस एज n1। और अगर आपको दोनों ने इंक्लूड करने हैं सो n2 माइनस n1 माइनस 1 कर देंगे, है ना। So this is how we do it. This is the number counting principle I am talking about, which I have already explained to you all. So I hope this everyone is clear with this thing. Now let's move forward. Okay. Now we have this question. Find the value of the expression 1 minus 6, 2 minus 7, 3 minus 8 up to 100 terms. Okay, up to 100 terms. तो इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। Now this is what 1 plus 2 plus 3, ठीक है। And this is what minus of 6 plus 7 plus 8, ठीक है। अब ये आपको 100 टर्म्स तक पूछा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसमें 50 टर्म्स इसके होंगे एंड 50 टर्म्स इसके होंगे। ओके, बिकॉज 100 टर्म्स है ना। और पेयर क्या है, ये 1 माइनस 6, 2 माइनस 7, ये वो, ठीक है। तो इसको मतलब फर्स्ट एंड guys, look at this question. We have this 1 minus 6, 2 minus 7, 3 minus 8 till 100. So basically ये सीरीज क्या है, 1 plus 2 plus 3 till 50 टर्म्स, क्योंकि 100 में से आधे ये 1 plus 2 plus 3 plus 4 होंगे, माइनस 6 plus 7 plus 8 till 50 टर्म्स, क्योंकि 100 में से आधे क्या होंगे, ये 6 plus 7 and all, ठीक है ना। So we have to find, तो इसका तो sum very easily you can find n plus 1 by 2. So what will that become, 50 plus 51, 50 into 51 by 2, that is this is 25, and this is what 55, 51 into 25, this is 5 5s are 25, and this is 2, so this becomes 10, so this is 1275. Okay, ये तो 1275 आ गया। What about this? Okay, तो सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए 2a plus n minus 1 into d, क्योंकि बाकी तो लास्ट वास्ट टर्म पता नहीं है तो ऐसे ही कर लेते हैं। So 2a, what is a, 6, what is n, 50 minus 1. Okay, we have 50 minus 1 here. Okay, d is again 1. ओके, एंड दिस इज 50 by 2। तो देखिए थोड़ा तो ये दिस इज अ लिटिल बिट कंबरसम देन दैट वन, बट स्टिल विल मैनेज। ये 50 by 2 है। नाउ दिस इज व्हाट 9 plus this is 1, ओके, एंड दिस इज 61।
सो 50/2 इंटू 61. सो बेसिकली अगर यहाँ पे ऐसे करते 50/2 51 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचता -61. सो -10 बचता, -10 इंटू 50/2. ठीक है, तो ये क्या हो जाता 25. तो आपका -250 हो जाएगा आंसर. ओके, तो -250 हो जाएगा. कैसे भी कर सकते हैं, है ना. just multiply this, still you can get, you will have what, 61 into 25, 5, this is 30, this is 2, this is 12, you have 15, 25, and just subtract this. So this will be what, 1275, 0. Okay, and this is 5, this is again 4, 2, so you have -250. So anything you can do. All right, so just try to shorten your calculation as far as possible, and that will give you the answer. So I hope everybody is clear with this thing. This is all for this class. Let's meet in the next class, and I will be providing you solutions daily. I am giving you solutions of some of the practice sheets. So soon I will be providing with you with all the solutions. Thank you for this class.